Hello students, my name is Ashish Sharma, Assistant Professor in Department of Electronics and Communication, Jaipur Engineering College and Research Center. And today we are going to perform our next practical, that is practical number 6, and which is to interface motor using relay with Arduino and write a program to turn on motor when push button is pressed. So very easy program is this and very easy practical. Let me tell you. Okay, so again, uh, first of all, we should read the aim of the practical carefully, what we require. So first, to interface motor. So motor is the first component. Using relay. So relay is the second component. Third is Arduino. Okay, and then push button. So four things are required. Okay, when push button is pressed. So this is our practical. So now I am going straight to our circuit diagram of this practical. So this is a circuit diagram of the practical and I have connected these all things. हर प्रैक्टिकल के अंदर मैंने आपको बताया है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल हियर दिस इज स्विच, दिस इज आर्डुइनो, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज ट्रांजिस्टर एंड दिस इज रिले एंड दिस इज motor and this is battery source, battery to turn on or complete the circuit. So whatever component you need just to press here P. Okay, and after pressing the P, just type the name of the component. For example, I write motor, I will get lot of motor. So we need simple DC motor. Just click on this, press OK. So motor will be added here. और इसको अगर आप उठा के यहां से ऐसे क्लिक करेंगे, यू विल गेट द मोटर. कितनी मोटर चाहिए, आप जितनी मोटर चाहिए आपको यहां से ले सकते हो. अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, तो इट इज नाउ जस्ट वेट. डिलीट ऑब्जेक्ट. सो आई हैव डिलीटेड. सिमिलरली अगर आपको बैटरी चाहिए, आपको बैटरी मिल जाएगी. आपको ऊनो चाहिए, ऊनो बोर्ड मिल जाएगा, बैटरी मिल जाएगी. जो दीज ऑल थिंग्स आर अवेलेबल हियर. Okay, I'm just zooming in little bit. Okay, so now क्या किया हमने, just wait. So इस Arduino जो है, इस Arduino के इनपुट में एक स्विच लगा दिया. इनपुट लगाया हमने A0. A0 पे हमने एक इनपुट लगा दिया. आप इसको प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगा, छोड़ोगे हट जाएगा, प्रेस करोगे बंद हो जाएगा. ये है. उसके बाद हमने ध्यान रखिए पिन नंबर A0, 0 पिन नंबर. पिन नंबर 3 पे हम आउटपुट ले रहे हैं जो 220 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू एक ट्रांजिस्टर में जा रहा है. और हमेशा हम जानते हैं दिस इज कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर में जो आउटपुट होता है वो हमेशा कलेक्टर पे हम चेक करते हैं, कलेक्टर के ऊपर. ओके, इसका मतलब अगर सपोज ये स्विच दबाएंगे तो दबाने के बाद जो करंट है वो इस 220 ओम के थ्रू यहाँ पे फ्लो होगी और आउटपुट यहाँ पे आ गया. इसका मतलब यहाँ पे हाई वोल्टेज डेवलप होगा. वोल्टेज डेवलप होते ही ये जो रिले है कनेक्ट हो जाएगी, आपकी मोटर चल जाएगी. अगर स्विच को हटा दिया ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी. इसका मतलब सिंपल सा प्रोग्राम बनेगा. सर्किट डायग्राम में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ कनेक्शन का ध्यान रखना है. तो कनेक्शन जो है A0 और पिन नंबर 3 के ऊपर ही हमें यूज करने हैं. सो आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड द प्रोग्राम इन Arduino IDE. So let me check this. So simple, relay pin 3 number, button pin A0, clearly mentioned here. Button pin A0, so here it is A0, and relay pin is at 3.
So it is at 3. Okay, then all the connections are same. Okay, and if you want to check the values of these, or you want to change the value of, for example, you want to change the value of resistance, just click on this, double click, a window will be open where you can change the value of the resistance also. Now A0 button pin, 3 resistance. So A0 is our button pin and 3 is relay pin. You can write anything here. You can also write another sentence. Now we have defined here that relay pin will be output and input button is the button pin is the input. Now a very simple loop. If digital read button pin basically mean button pin is pressed, so output will be high. High in the sense the motor will run. And if else in the sense ki other value, if it is 1 then it is 0, if it is 0 it is 1. So button pin is high, then relay pin will work, otherwise low, then digital write relay pin. So here relay pin will be high if we press the button pin. Let me run this program. It is taking a little bit time because maybe the system may be slow a little bit. So compiling done. That basically means our program is executed and it has generated a machine level language. Now where this machine level language is, this machine level language exists at, just let me check where is its so this is the address of our hex file or this code. Okay, now we will copy this and we will paste it in our program. Okay, now I'm going to run it. Okay, so our program is started. Now as I press the button, our motor has started. Motor is moving. That basically means the circuit is completed. As I remove this, the motor is stopped. Again I pressed it, motor is started. Again I left it out, it has stopped. So this is our another practical, which is very easy practical, and I have given you the demonstration of this. Let me stop it, and this is our next. This is our practical. Thank you so much. I hope you like this practical a lot.